Good morning, friends. How are you all? Fine? Yes. Now, last time in this science के lesson में हमने different hormones which helps in control and coordination वो देखा था in the plant. Growth hormone which reduce the growth, which control the growth, which hormones are there, that is abscisic acid. वो हमने देखा था different hormones of the plant which help in the control and coordination of the body in a plant. Now same way, we the human beings and all the other animals have the brain, the spinal cord, right? That is the nervous system for the control and coordination. But whenever it is a reflex action like a dangerous situation, why the emergency, the urgency comes, then what happens? For the small matters, even the brain cannot do the work efficiently. While there is a nerves, so we can send the messages to the brain from those cells only which is connected to the nerves and the brain. But it is not possible every time, and therefore for helping the nervous system we also have the hormones. जैसे छोटे छोटे बातों के लिए जैसे that respond the surrounding, respond the stimuli के लिए we have the some hormones, that is hormones secreted from the different part of the body for the different purposes from the different gland, and that is our endocrine system. From the different gland we have different hormones secreted from the gland, and that gland is what? It is a ductless organ. That is, they do not have any tubes like structure जैसे nerves है या arteries and veins है जैसे blood का transportation करते हैं. But here is the endocrine glands. जो glands है, it is a ductless. Ductless मतलब उसके पास कोई ऐसी tube नहीं है. It just secretes the hormones, the chemicals in our body, and that hormones will mix with the blood and go through the whole body. Therefore, this system of the different gland from here to here in our body is called a endocrine system. Different glands in our body consist of endocrine system. In the endocrine system, suppose we have seen some example here. First of all, that is, here is एक example आपको textbook में दिया गया है कि whenever some urgent situation, अगर कुछ ऐसा dangerous situation create होता है for the squirrel, you know that कि squirrel कैसे धड़ाक से आवाज से धड़ाम से भाग जाती है. So whenever there is a danger situation in our surrounding, our mind is ready to fight or to run. Now decision taken by that nervous system कि आपको वहां से भागना है या उसके साथ फाइट करना है. Just a minute. Therefore क्या हो जाएगा? अगर आपको भागना है या तो रन करना है, that depends on your mind. और वो जो अर्जेंट सिचुएशन है वो डिसाइड करते हैं हमारे हॉर्मोन्स. क्यों? क्योंकि दैट इज व्हाट हियर इज द बोथ आर वेरी कॉम्प्लिकेटेड. वेदर यू हैव टू रन और यू हैव टू फाइट, इट नीड्स अ लॉट्स ऑफ एनर्जी. अगर एनर्जी नहीं है तो आप भाग भी नहीं सकते. सो दैट इट विल यूज आइदर बोथ द एक्टिविटी टुगेदर. Two alternate activities which is fighting or running are also quite different. This situation is some common preparation can usually made by the body. कुछ भी करना है, अगर रन करना है या भागना है, उसके लिए आपकी बॉडी को प्रिपेयर होना पड़ेगा. एंड दिस प्रिपरेशन के लिए हमारी बॉडी में कुछ हार्मोन सीक्रेट होते हैं, राइट? यस. तो दैट्स इट. स्क्विरल के लिए है या डियर इन द फॉरेस्ट, राइट? जब शेर आ जाता है तो पहले वो देखेगा, फाइट करेगा या भागेगा. सो वॉट एवर इजियर सिचुएशन इट विल कीप दैट. सो वी नो दैट ऑब्वियस है कि भाग ही जाएगा. दैट मीन्स व्हाट? फॉर दैट ऑल्सो हिज माइंड हैज टू प्रिपेयर एंड टेक द डिसीजन. देन इट डिपेंड्स ऑन अवर हॉर्मोन्स. वो हमारे हॉर्मोन्स के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि जब तक कि वो डेंजरस सिचुएशन का
केमिकल इम्पल्स नर्व्स लेके ब्रेन में जाएगा एंड ब्रेन गिव्स द ऑर्डर टू रन अवे, तब तक तो सिचुएशन हाथ से चली जाती है. So that in that situation, in urgency, the hormones is only the way. The nervous system is inefficient to do the emergency work. You understand this? Yes. So here, first in our body is the adrenal gland, that is here. In our body, adrenal gland is there. Here is the, in our textbook, the diagram is given where is the body, which is the gland present in our body. उसमें अगर आप देखेंगे that the adrenal gland with the pancreas. So adrenal gland secretes the adrenaline hormone. That is name of the chemical which is secreted by the adrenal gland. Secretes directly. Here it, मैंने आपको पहले ही बोला कि वो डक्टलेस है. So the adrenal gland secretes the adrenaline directly into the blood and carried to the different part of the body. अब इसका काम क्या है? जब भी कोई इमरजेंसी अर्जेंट सिचुएशन है, तब adrenal gland will secrete the adrenaline hormones to respond the stimuli. To respond the stimuli like, जैसे भी मैंने आपको डियर या स्क्विरल का एग्जांपल दिया, जैसे वो सामने कुछ ऐसा आ जाता है जिससे डेंजरस सिचुएशन क्रिएट होती है, तो घबरा जाते हैं, दैट इज हार्ट बीट इंक्रीज हो जाते हैं. लाइक दैट हमें भी ऐसा कुछ दिखाई दिया जिससे हम डर गए, रात को भूत दिखाई दिया सपने में, नॉट रियली, राइट? ओके, सो क्या हो जाएगा? डर जाएंगे. What is डर? डर क्या मतलब क्या हो गया? जैसे धक 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 से जोर से करने लगे. You know what? That heartbeat increases. Whenever you pass on through the dangerous situation, that your heartbeat increases. आजकल तो सिर्फ और सिर्फ बोर्ड का रिजल्ट भी अगर आने वाला है, then also अगर heartbeat increases हो जाते हैं, right? That means some dangerous situation को respond करने के लिए the heartbeat increase हो जाना. Supplying more oxygen to our muscles. You know कि हम बहुत भागते हैं, then we need some more energy and then हमारा breathing rate high हो जाता है, जैसे हम हाफने लगते हैं. So it increase the breathing rate as well as it needs the more oxygen. And इसीलिए muscles को जब more oxygen चाहिए तो क्या होगा? It supply the more oxygen to the muscles by breathing rate is increases, right? Like this. So we कैसे वो अपने आप बढ़ जाता है? Why? Because muscles needs more oxygen, so our breathing increases. वो breathing increase कैसे हो गया? अपने आप कैसे increase हो गया? Because of this adrenaline hormones. जैसे कुछ अच्छा देख के मुंह में पानी आ जाना, जैसे हमें कुछ सैड सिचुएशन में सैडनेस एंड हैप्पीएस्ट सिचुएशन में हैप्पीनेस फील होना, जैसे हम खुश हो जाते हैं, राइट? डर जैसे है, डेंजरस है तो हार्ट बीट इंक्रीज हो जाना, कुछ ऐसा देखेंगे तो पसीना छूट जाएगा. लाइक ऑल दिस इज रिस्पॉन्ड द स्टिम्यूली, उसे हम बोलेंगे रिस्पॉन्ड द स्टिम्यूली. एंड इसी सिचुएशन में रिस्पॉन्ड करने के लिए एडर्नल ग्लैंड इज प्रेजेंट इन अवर बॉडी टू सिक्रेट द एड्रेनालिन हॉर्मोन्स. This all are the situations which control by this adrenaline, right? Okay? Yes. Then another is some more hormones which help in control as well as in coordination. So the another is thyroid gland. You know where is it? Here it is, thyroid gland. Thyroid gland secretes the thyroxine hormones. Thyroid gland में से which hormone is secreted? Thyroxine. And this thyroxine secrete होने के लिए iodine is required. Thyroxine के secrete होने के लिए क्या जरूरी है? Yes, thyroxine के secretion के लिए iodine. आपने कभी नमक की एड देखी? Have you seen the advertisement of the Tata Namak? That is the salt. It is called iodized namak, iodized salt. That iodized salt provide us iodine, right?
and it is required for the thyroid gland to make the thyroxine hormone. अगर thyroxine hormone is also needed for controlled growth. This is very important. You know that thyroxine is not synthesized in the absence of iodine. अगर iodine की deficiency हो गई, iodine कम है, it causes goiter. You know that the swollen neck is there. That is goiter, right? क्योंकि our thyroid gland is in here. If कुछ भी disturbance हुआ, if iodine is not available properly for the body, हम आयोडाइज्ड नमक का यूज नहीं करते हैं, तो what happen? That is disturbance in the thyroid gland. It cannot produce the proper thyroxine, and therefore this thyroid gland swollen हो जाएगी. That is the swollen neck is there that cause the goiter. That is called goiter. अब goiter में होता क्या है? That is the thyroxine is needed for controlled growth. Controlled growth के लिए two hormones is important. One is thyroxine and another is the growth hormone. This growth hormone is secreted by the pituitary gland. You know here it is with the brain. Brain के पास pituitary gland है. This pituitary gland and thyroid gland both secretes the thyroxine and the growth hormone which is necessary for the controlled growth. अगर किसी के अंदर goiter है, that is thyroid gland में disturbance है, that means sometime iodine is more, sometime iodine is less. तो thyroxine अगर ज्यादा produce हो गया तो it will control your growth. तो क्या हो जाएगा? जैसे कि हमारी बॉडी एकदम सिंगल सी हो जाएगी, कुछ भी कितना भी खा लो बॉडी फैट लेगी ही नहीं. इट विल नॉट एब्जॉर्ब द फैट एंड कार्बोहाइड्रेट, एंड इसीलिए आपकी बॉडी जैसी है वैसे सिंगल, ऐसे कुछ बहुत से पतले होते हैं. इट विल नॉट इंक्रीज योर वेट, वेट इंक्रीज ही नहीं होगा. दैट इज थायराइड. और अगर थायरॉक्सिन कम हो गया, अगर हमारा थायरॉक्सिन जो है वो प्रोड्यूस नहीं हो रहा है, कम हो रहा है, तो व्हाट हैपन? इट इज एबनॉर्मल सिचुएशन अगेन, एंड वो क्या हो जाएगा? ऐसे मोटा. जैसे आप कभी देखते भी किसी की बॉडी बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा बॉडी वालों को आपको पूछेंगे इट इज एनी रीजन, हैव यू एनी डिसीज, तो उसको थायराइड है ऐसे बोलेंगे. व्हाट इज थायराइड है? थायराइड तो सब में होती है, बट थायराइड ग्लैंड का जो डिसीज है इज कॉल्ड द गोइटर. इफ थायरॉक्सिन प्रोड्यूसेस मोर देन इनफ, then it will control the growth, और वो एकदम पतला सा हो जाएगा. And if thyroxine is not produced up to certain level, then वो मोटा सा हो जाएगा. That means what? अगर controlled growth चाहिए, proper growth of our body needs two hormone, that is thyroxine and growth hormone. Thyroxine is produced by, secreted by thyroid gland in our neck. Produce, it is to maintain its growth, iodine is necessary. Thyroxine, thyroid, iodine. If deficiency of iodine है, then the disturbance in the thyroid gland will cause the goiter disease, pituitary gland over here, and it will produce the growth hormone. अगर डेफिशिएंसी हुई आयोडीन की या ग्रोथ हार्मोन की तो कॉज ड्वार्फिज्म. कभी आपने ऐसा देखा है? ड्वार्फिज्म मतलब क्या? कुछ लोग चाइल्डहुड में जब उसका ग्रोथ हार्मोन प्रॉपर नहीं होता, पिट्यूटरी ग्लैंड प्रॉपर डेवलप नहीं होती, तो जो हाइट नहीं बढ़ती है, इतने छोटे बच्चे रह जाते हैं. दैट इज कॉल्ड द ड्वार्फिज्म. यू नो दैट कि किसी किसी की हाइट बहुत कम होती है, ठिंगू जी, राइट? यस, तो दैट इज कॉल्ड द ड्वार्फिज्म. ये ड्वार्फिज्म किसके लिए है? जो ऐसे बटुक रह जाते हैं. दैट इज व्हाट, उनकी हाइट जितनी होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू देयर ग्रोथ वो नहीं बढ़ रही है. एंड दैट्स व्हाई दिस ग्रोथ हार्मोन की डेफिशिएंसी विल कॉज ड्वार्फिज्म. आयोडीन डेफिशिएंसी विल कॉज गोइटर, दैट इज द फैट इंक्रीज या डिक्रीज होना. पिट्यूटरी ग्लैंड्स ग्रोथ हार्मोन हाइट इंक्रीज या नहीं होना. सो अगर ग्रोथ हार्मोन इज लेस, then it will cause the dwarfism. You understand this? This is all about the controlled growth. And this controlled growth is
due to the thyroxine and growth hormone secreted by thyroid gland and pituitary gland. राइट कभी आपने ग्रोथ के बारे में ऐसा देखा है कि कंट्रोल्ड ग्रोथ मतलब क्या? कभी जो ट्री है, ट्री में कंट्रोल्ड ग्रोथ मतलब कि उसकी हाइट अमुक लेवल से बढ़ने के बाद वो नहीं बढ़ेगी, बट द लीव्स कैन ग्रो एनीवेयर. इन अवर बॉडी हैव यू एवर सीन दैट कि ये फिंगर्स जो है वो पाम से ही ऑलवेज निकलती है? कभी ऐसा सोचा कि कहीं कहीं पे भी फिंगर्स निकल आई, इट विल ग्रो. कभी ऐसा सोचा हैंड्स जो है नीचे जमीन तक आगे बढ़ गए? हैव यू एवर सीन ये नाक जो इतनी लंबी हो गई? नेवर. दैट मीन्स दैट इज कंट्रोल्ड ग्रोथ. ग्रोथ हार्मोन को भी और पिट्यूटरी ग्लैंड एंड दिस थायराइड ग्लैंड इज डिजाइन्ड नेचुरली फॉर कंट्रोल ग्रोथ. वो कंट्रोल ही ग्रोथ करता है. ये जब इतनी हो जाएगी उसके बाद आगे नहीं बढ़ेगी. यू अंडरस्टैंड दिस? दिस इज कॉल्ड द कंट्रोल्ड ग्रोथ. राइट? यस. So here sometimes this understood by this कि very fat या very thin person due to the disturbance in thyroxine in the thyroid gland will cause goiter. Two types of thyroid होते हैं, या तो वो बहुत मोटा होगा या तो वो बहुत पतला हो जाएगा. That is both is goiter. And पिट्यूटरी ग्लैंड के ग्रोथ हार्मोन से या तो एक्सट्रीमली टॉल पर्सन हो जाएगा या तो ड्वार्फ रह जाएगा. एंड दैट इज कॉज्ड बाय दैट ग्रोथ हार्मोन, दैट इज डिस्टर्बेंस इन द ग्रोथ हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड, दैट इज कॉल्ड ड्वार्फिज्म. राइट? यस. So now the another is, have you seen some changes when the puberty period is there? We will see in detail that what is the puberty period and what happens, which are the changes in that. बट इन जनरल अगर देखा जाए तो सम चेंजेस दैट इज व्हाट, जैसे जब इन द गर्ल्स, राइट, सम बॉडी पार्ट्स डेवलप्ड आफ्टर 13 years, राइट, सम न्यू चेंजेस अकर्स लाइक इन वॉइस चेंजेस, body shape changes, the behavioral change, like in the boys also mustache and beard develop, right? This all are the puberty changes. And this puberty changes occurs after 10 to 12 year after, that is from the 13 year, right? It depends on us कि हमारे अंदर कब होता है. So after 10 to 12 years, this change is associated with the puberty. This is because of the secretion of the sex hormones in the male and female. बाकी के सारे जो hormones है वो male and female में same होते हैं, but in male and female the sex hormones is different. This glands is inactive. ये जो sex hormone secrete करने वाली gland है that is inactive in the childhood. After the puberty period it gets activated and then it secretes the sex hormones, right? And then you have to keep in mind the name of the sex hormones in male and female that cause the changes of puberty. So, here is the sex hormones. In female, that is here. Here is progesterone. Just a minute. And progesterone and the another is estrogen. These are progesterone and estrogen are the two hormones in the female secreted from ovary. Secreted from the ovary. Ovary में से
प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन सीक्रेट होते हैं, while in male testosterone is there. Right? Testosterone is there, which is secreted from testes. Right? So the ovaries and testes are the sex gland. ये glands है जिसमें से सेक्स हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं आफ्टर 10 to 12 ईयर. 10 to 12 ईयर तक ये इनएक्टिव होती है इन द चाइल्डहुड. चाइल्डहुड में रिप्रोडक्टिव सिस्टम इज इनएक्टिव. After this puberty period, these two glands in the female and male get activated and started to secrete the sex hormones. In the female, progesterone and estrogen, while in male, testosterone are the sex hormones which cause some changes. That is called the puberty change after 10 to 12 years. Do you know anyone in your family or friend who has been advised to doctor to take the sugarless? Yes. Then the another अगर बात करते हैं, ये एक hormones है. This is our glands, that is sex hormones produce करने वाली glands है, which is different in female and male. The another अगर बात करते हैं, that is कि sugar. Have you ever heard about the diabetes? आपने कभी डायबिटीज का नाम सुना है? तो दैट इज अनदर हार्मोन विच इज सिक्रेटेड बाय पैंक्रियास. Have you ever heard that pancreas it secrete insulin? उसका वर्क फंक्शन, उसका काम है कंट्रोल द sugar level. It controls the sugar level in our body, right? Yes. The pancreas helps to regulate the sugar level in the blood, right? If it is not secreted in the proper amount, then it causes the harmful effect. It is important that suppose कि pancreas जो है उसमें से इंसुलिन नाम का हार्मोन सिक्रेट होता है. इफ द इंसुलिन इज मोर, अगर इंसुलिन ज्यादा हो गया, ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, तो वो शुगर को इतना कंट्रोल कर देगा कि दैट मीन्स वी फील द लेजीनेस, कॉजीनेस, दैट वी कैन नॉट डू द वर्क. इवन समटाइम्स इतना शुगर लेवल लो हो जाता है कि हम खड़े भी नहीं रह पाते. समटाइम्स इट कॉज टू द लीड्स टू कोमा, कोमा में चला जाता है. राइट? That means what? कि चक्कर आना, काम न कर सकना, that is all is due to the control of the sugar level. अगर insulin is more than enough, it causes the sugar level down. If insulin is not enough, it is less, then it increase the sugar level. That both the situation cause diabetes. both the situation क्या है? Diabetes है. डायबिटीज में शुगर लेवल इंक्रीज या डिक्रीज हो जाता है. दैट इज सम कैसे कि रिस्क है. दैट इज व्हाट कि सब लोग ऐसा कहते हैं कि ज्यादा मीठा खाने से डायबिटीज होता है. नो, डायबिटीज इज अ हार्मोनल चेंज. Diabetes is a natural disease. If your pancreas is not doing the work properly, the sugar level increase या decrease होता है because of this insulin disturbance. पर एक बार जब diabetes हुआ, then you have to control your intake of sugar. होने के बाद आपको sugar intake कम करना पड़ेगा. But sugar ज्यादा खाने से diabetes होता है? No. Now, if the insulin is not properly caused, अगर वो properly secretes नहीं होता है, it is less, तो क्या होगा? Then doctor suggest to give the insulin from the outside. If it is possible, अगर बहुत ज्यादा जरूरत नहीं है तो इंसुलिन की टेबलेट्स होती है डायबिटीज कंट्रोल करने के लिए, दैट इज शुगर लेवल कंट्रोल करने के लिए. बट whenever it is out of control, अगर इंसुलिन बिल्कुल ही प्रोड्यूस नहीं होता, पेनक्रियास will not work properly. Then what happen? तो इंसुलिन के इंजेक्शंस होते हैं.
जो कि बाहर से इंसुलिन दिया जाता है टू कंट्रोल द शुगर लेवल. दैट इज द वे, राइट. जब नेचुरली इंसुलिन इज नॉट सिक्रेटेड इन अवर बॉडी, we'll give outside that, we give this insulin from the outside by in form of injections. It is directly injected to the blood and which control the sugar level, right. So this is very important that pancreas is also the gland which secretes this insulin hormone, that is the control the sugar level. So these are some glands and all the glands together forms the endocrine system. जैसे हमारी बॉडी में डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम एंड ब्रीदिंग सिस्टम है, नर्वस सिस्टम को हेल्प करने के लिए वी ऑल्सो हैव दिस एंडोक्राइन सिस्टम. इन दैट डिफरेंट ग्लैंड्स आर देयर. ग्लैंड्स आर द ऑर्गन दैट इज डक्टलेस ऑर्गन्स. इसमें से जो भी केमिकल्स या हार्मोन्स सिक्रेट होते हैं, इट इज डायरेक्टली कैरिड आउट टू द ब्लड एंड कैरिड टू द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी. Okay, so on the page number 125, there is the table is given. Growth hormone from the pituitary gland and thyroid gland. Pituitary gland and thyroid में से thyroxine both is control the growth, stimulates the growth in all the organs, regulates the metabolism and growth, regulate the sugar level also. देन इंसुलिन जो है शुगर लेवल को कंट्रोल करता है. इट इज सिक्रेटेड फ्रॉम, आपको ये टेबल में लिख लेना है कि वो कहां से सिक्रेट होता है. तो इंसुलिन इज सिक्रेटेड फ्रॉम द पैंक्रियास एंड देयरफॉर इट रेगुलेट्स द शुगर लेवल. देन टेस्टोस्टेरोन, दैट इज टेस्टोस्टेरोन इज द मेल सेक्स हार्मोन्स secreted by the testes and that is develop the sex organs. Changes in the puberty period, that depends on this, regulates the, now from the ovaries progesterone and estrogen is produced in the female, that regulates the menstruation cycle, that changes the puberty period में जो भी changes होते हैं depends on the, that is sex hormones. एड्रेनालिन, दैट इज द एडर्नल ग्लैंड, जो सबसे पहले हमने डिस्कस किया था. इट इज रिस्पॉन्ड द स्टिम्यूली, उसका काम क्या है, रिस्पॉन्ड द स्टिम्यूली, दैट इज रिस्पॉन्डिंग द सराउंडिंग चेंजेस. देन रिलीजिंग हॉर्मोन्स स्टिम्युलेट्स द पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज द हॉर्मोन्स. रिलीजिंग हॉर्मोन्स जो है दैट इज द हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स विच इज इन द ब्रेन. ब्रेन के पास है हाइपोथैलेमस ग्लैंड्स जो सारी के सारी जितनी भी ग्लैंड्स है वो ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है. पिट्यूटरी ग्लैंड्स को कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस. रिलीजिंग, उसके अंदर से ग्रोथ हार्मोन कितना रिलीज होगा, दैट इज कंट्रोल्ड बाय द हाइपोथैलेमस ग्लैंड. हाइपोथैलेमस ग्लैंड इज ब्रेन के नीचे है. वो हाइपोथैलेमस ग्लैंड कंट्रोल द पिट्यूटरी ग्लैंड एंड पिट्यूटरी ग्लैंड कंट्रोल दिस होल ग्लैंड्स. So that releasing stimulates the pituitary gland to release the hormones. Stimulates the pituitary gland. कौन करता है, हाइपोथैलेमस ग्लैंड. हाइपोथैलेमस जो यहाँ ब्रेन के पास है उसे हेड ऑफ द डिपार्टमेंट का दर्जा दिया गया है. So hypothalamus stimulates the pituitary and pituitary control the all. Right? So these are different glands that is endocrine system produce करता है. Okay, then some in-text question is there. How does chemical coordination takes place in animals? That is all the endocrine system आपको explain करनी है. Why is the use of iodized salt is advisable? Because iodine control the production, that is secretion of thyroxine in the thyroid gland, which is very important for the controlled growth. How does our body respond when the adrenaline is secreted into the blood? That is increase the heartbeats in the dangerous situation, right? Then sweating, then increase the breathing when the muscles needs the more oxygen. This is all controlled by the adrenaline gland. Is secreted the adrenaline. Why are some patients of diabetes treated by giving the injection of insulin? Because in their body, pancreas is not doing the proper work and insulin is not produced naturally. So to control the sugar level in their blood, we have to give the insulin from the outside. Right? So that is treated by giving injection to the insulin to that patient. Okay? So here is the end of the lesson.
we have to make a note of this, all the glands, secretes which endocrine glands, which secretes which hormone and what is its work. इसके बारे में 1-2 मार्क का क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा. So you have to do the make a note of that and send it to me. The lesson is over here. Then we'll go to the next lesson in the next lecture. Till then, bye.